physics. After guys, from the Department of Physics and the students of this department. It is a privilege for us that Mr. Sethi has come to this college to deliver his talk on the celestial unseen bodies that has to be discovered, how those are unveiled. And it is a nice topic. While I was discussing with Mr. Arun sir, yesterday he told me that one of my friends is residing at Poland is coming to give his delivery talk here. I was so surprised and I was so thankful to him because I have lots of interest in this kind of discussions and topics. I have an interest in astronomy also. Being a student of botany, I also like physics very much. And that's why the friendship between Arun sir and me has grown up from the beginning when we were joined in this college. Anyway, I will some few words regarding this topic. Through the science delivered, this is the topic basically the unseen things, those we cannot see by the traditional telescope that was used by the scientists. But this radio waves can see all the unveiled things like the solar system, beyond the solar system, the Milky Way, the cosmic rays, all the things we can observe by this telescope developed by, accidentally it was developed by Carl Jansky in 1930s, probably as I was looking in the Google, searching in the Google right now before starting off this seminar. This is a nice topic. So many things we can unveil because they are not hindered by the clouds, the dust, all that hindered during the traditional telescope. We cannot see, observe things in this universe. So in the Milky Way, what is going on, what type of waves they can work, we can only see by the specialized, sophisticated telescope developed by so many scientists later on. So this is a nice topic to be delivered by Mr. Sethi. I am so much thankful that he has taken all the time to come to this college for discussing these topics. I will enjoy with the students. That's my pleasure. Thank you very much. Friends, now the end of the inaugural session. Now I request Sagar Sethi sir to deliver the talk. खेळतो त्याने काल फुटबॉल मॅचটা कधी कधी सुंदर असला ना लाईव्ह खेळू नाही असे क्वालिटी नाही आधी तो स्पोर्टचे बरेच किती असते असेल तर येणार होते लाईव्ह असेल टाटा सोबत राहू ना काढता ते खाऊ काल काढता एके दिवशी दे ना असला घ्यायची त्याला लाईव्ह करतो स्टार्ट होऊन गेला काय लाईव्ह करत होतं हां तो खेळ टाटा केते सात पर देखे देवी लोग गुरु लोग काल जे लिंक पठे गेली सरी
ইনা আসছি দেখ ইনা এলা না হবে নে হটস্পট নে চাকরিটা আমার লাগে খ্যাতি কার বলবে Wait. Apa ini sih? देखा हो गया ख्याति Am I audible to everyone? Yes, sir. To the end? Respected principal sir and respected audience sir, thank you for inviting me to present this talk. So this is my first talk in any college, BSc and MSc students. So I will try to deliver as it is like simple English and try to deliver it also in Korea.
some terms I can't tell in English, so I will tell in Odia. Sorry, some terms I can tell in Odia, I will tell only in English. So, so before, okay, ମୁଁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ପାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଟେକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି। ତ ତମେମାନେ ଯେହେତୁ BSc ପଢ଼ିକି MSc ପଢ଼ିବ, ତ ତମମାନେ ଜାଣିନଥିବ କି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ବି କେଉଁ ବିଟେକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ MSc ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ଆମ ରୁଲ୍ସ ଏମିତି। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ମୋର ପଢ଼ିଲି, ଟ୍ରାଏ କଲି, ଆଉ ସେ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଅଛି। ଅରୁଣ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପଢ଼ିଛି। ଏତିକି ଜିନିଷ କହିବି କି ମୁଁ ଯଦି ବିଟେକ୍ ପଢ଼ିକି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି PhD କରିପାରିଲି, ମାନେ ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ିକି ସିଓର କରିପାରିବ। ତ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେବ, କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ମୋତେ ପଚାରିବ, ମୁଁ କହିଦେବି। ଆଉ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ ପଚାରିବ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଏଣ୍ଡରେ। ତ ମୋତେ ଯଦି ଆନ୍ସର ନ ଦେବ, ଦେନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ତମକୁ କହିବି ତମକୁ ଜଣାଯାବେ। ଓକେ, ସୋ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ମିକ୍ସ କରିକି କହିବି, ବେଟର ହେବ। So we all know about astronomy. So whenever we heard about astronomy, we will only think about planets and telescopes, star, galaxy, night sky, galaxies, like astronauts, they generally go to space and everything, ISRO and everything, all those things we know. Okay, so but what I am studying or what I am doing research is in the radio. So how the radio is related to the astronomy or the universe, so that we want to know. Okay, so first I will go through all the basics from the waves and everything. There will be no mathematical term, there will be no complex things will be there, and slowly we will go towards the end of the journey, like how we see the universe in the radio wave. Okay, so what comes to your mind when you heard the radio? Like, this is right, this is radio. So do you think माने रेडियो एस्ट्रोनॉमर माने रेडियो को नहीं कि कोन स्काई ऑब्जर्वेशन करछन्ती, सेमिति ना नहीं, सेमिति तो नहीं, किछ तो जिंस थिबो। सो एटा होची गोटे ट्रांजिस्टर डिवाइस जोटे कि हमें एफएम स्टेशन रु गीत सुनु, हमें किछि माने मनोरंजन पे करू। देन this is just a radio receiver that we send the signal in radio waves, and this device can receive the radio signal. But this same radio waves, it is also electromagnetic wave that you studied in your physics. So electromagnetic wave contains optical light, UV light, infrared light, X-ray light, and radio also. So the tube light and whatever we see in our day-to-day life, we see in our eyes, and those are visible or optical lights. So now, then how the radio is related to our universe, or how the radio is related to astrophysics, that we want to see here. Very simple, no need to worry. It's because just understand, you all are physics students. At your age, I was not aware of much physics. I was studying my BTech, and तमे सब जानी छो ओडिशा इंजीनियरिंग कॉलेज रे कोन पढ़ा जाय, से जो 4 वर्ष पिकनिक। तो सेठी मु जहा पढ़ी थिली वो नॉलेज किछ नथिला, बट स्टिल आई ट्राइड, सो दैट मु जहा ट्राई कली तमानु धीरे धीरे बुझे। सो एबे आमे जेबे भी तमरो बोन भांगी जाए कोन हुए, आमे एक्सरे काढी जाउछो, राइट? कि नहले आमे सुनि देबा कि सन कैन एमिट इन UV, infrared and optical, everything. So is there something is there that is emit radio and we can't see it because our eye cannot detect the radio waves. Our eye only detect the visible spectrum, red, green, blue, that gives you a spectrum that you know from your physics. So how, because electromagnetic spectrum have different, like optical, X-ray, gamma ray, everything, how the radio is important here. So let's say there is
ଯେ ଗୋଟେ କାର୍ରେ ଅଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ, ସିଏ ଅପ୍ଟିକାଲ ୱେଭଲେନ୍ଥ ଏମିଟ୍ କରୁଛି କି ଲାଇଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯଦି ସେ ରେଡ଼ିଓ ୱେଭଲେନ୍ଥରେ ଏମିଟ୍ କରିବ ସବୁ ଯାକ, ତମେ ଯାଇକି ଏଠି ପିଟି ହେଇଯିବ କି ତମକୁ ଦେଖାଯିବନି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ରେଡ଼ିଓ ୱେଭ୍ ଏମିଟ୍ କରୁଛି। ତ ସେମିତି କିଛି। So let's find out together, okay? So first I will go through all the basics, okay? So first thing I will clarify here, in astronomy we are dealing with large objects, very very large objects, and we are dealing also with light. So that's why there will be no quantum effect, and there will be definitely relativistic effects, because see, whenever you are doing material science or any other condensed matter research, you have your lab. You have in chemistry, you have your all chemical reactions and everything. But astronomers only get light from the distant universe and they do everything. Okay? So that's why there will be light and there will be relativistic effects. So, तमाम सब जिनिस मन रखे दरकार नहीं. Just अल्प मन रखो. किसी भी डाउट है मझे हाथ उठाओ, मते इंटरप्ट करो और क्वेश्चन पचारो मते. Okay? So wavelength and frequency एटा तो समझ जानी. We know the wavelength is the distance between crest to crest, or maybe the distance between trough to trough. And frequency is how many number of wave is passing for the unit second. Okay, so this we know. Now, how we see the object? Like, let's say there will be no light. If we switch off all the light in this hall, we will not see anything. That means light is reflecting from a object and it come to our eyes. Then only we can see the any object, right? So that means our eye is an optical detector. Okay. So optical detector means it only see the small part of electromagnetic spectrum. So electromagnetic spectrum. So our eye is an optical detector, and we can see a part of electromagnetic spectrum. So electromagnetic waves. So you have studied electromagnetic theory or electromagnetism in your BSc, and you are going to study in your MSc also. Okay. So तमाम भीतर कहार फेवरेट सब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म माने मोर द थिला एक्चुअली आउ कान अछि भीतर काको भल लागे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म सर हाथ उठे मारे कहार फेवरेट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म कहार नहीं और सर पढ़े अच्छा ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म बहुत ही क्यूरियस लगे मते कहीं कि से माने गोटे यूनिवर्स फंडामेंटल फोर्स आ से माने मिस की कंबाइन की बोन सो आमे जानि छे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमर अछि से लो एनर्जी हाई एनर्जी पर्यंत अछि बहुत सारा. देन सेटा होछि हमर गामा रे एक्स-रे यूवी इंफ्रारेड माइक्रोवेव रेडियो and everything is there, like there are a lot. So now our eye only can detect this part, only a small part of electromagnetic spectrum, this part. We can only see a very tiny part. Okay, so this is very crucial to understand how, like, why we are going to other frequencies to study our universe. So now let's say तमारे जानी छ हमर ओजोन लेयर अछि सेति भाई हम मानको यूवी रे पड़े आसे स्काई राइट. तो तार तो हमर एटमॉस्फेयर बहुत रेडिएशन को ब्लॉक कर दे सेति भाई देयर इज एटमॉस्फेरिक विंडो इज देयर. नाउ आई विल टेल दिस थिंग. सो दिस इज लाइक इन द लेफ्ट साइड द एटमॉस्फेरिक sorry. So it is left side of the atmospheric opacity. Opacity means light केते परसेंट is हमर ग्राउंड को आसुची. हम जानि जे UV light definitely block हो जाय ओजोन लेयर हमर एटमॉस्फेयर रे. So that's why you can see here that high energy rays like gamma rays, X-ray and ultraviolet completely blocked. That's why it's 100%. So if you want to study universe in ultraviolet or X-ray or gamma ray, then you have to go above the atmosphere. That's why you have heard that ISRO send a satellite to the atmosphere to study the universe. So that because the light ray, which is very high energetic,
gamma ray, X-ray, and UV, they're blocked by our atmosphere. That's why we send them to study to the above atmosphere. So I will come to later why we are going to different kind of wavelengths and why it is important. So now you can see that some part of optical wavelength and infrared and like high infrared, they are partially blocked by our atmosphere. I am telling partially blocked by our atmosphere because that's why we put telescope and we can see the stars, because the optical light can penetrate our atmosphere. That's why we can see the stars. If our eye only sees, because our eye only see optical light, and if it will not penetrate our atmosphere, we will not see any stars, right? That's why it is penetrating our atmosphere. So there is another part what I told, radio waves. Radio waves are big, huge waves. Like you know that the optical wave is like around 100 nanometer to 400 to 700 nanometer. From 700 is the red and 400 is the blue color. So here you can see that atmospheric window is completely open for the radio waves. So radio waves are so huge, that's why there will be no blockage. It will easily pass through our atmosphere. That you can calculate using the skin depth. You have studied in magnetism. If you calculate skin depth of that wave, different wavelength, then you can see how our atmosphere is blocking. So those who are in BSc, those who not studied skin depth, remember this. This will be also helpful to your astronomy. Okay, if you study in your advanced area. So there are different type of telescopes are there. We have seen that optical telescope, people generally go to planetarium and everything. We see the planet and star. There are different kind of telescopes are there. You can see gamma ray telescopes are all satellites. X-ray telescopes are also all satellite. And those telescopes which are on the ground, like on our Earth, you can see here only optical telescope and some radio telescope can be built here, because we can detect those waves on the ground. Okay. So different types of wavelength require different type of detector. So this is the main conclusion. And now astronomers use different wavelength to study the universe, and so to studying the universe in different wavelength, we have a lot of advantage. It is because the different object tell different story in different wavelength. So that I will come slowly towards that. You will understand a little later. So this is a very interesting image published by some telescope operators. So you can see here, this is how a galaxy, particular galaxy is called Centaurus A, how it look like in optical waves. Let's say you can go there, and if you see in your eyes, it will be visible like this. Okay, but how it will be visible in different wavelength. In infrared, it looks completely different. You can see here. So those are false colors. Okay, then there is no red color in the infrared. And how it look like in UV? It's the same galaxy. It looks different in different wavelength. And again in X-ray, it's an exact different picture here. It's from the Chandra X-ray Observatory. And in radio, it is even completely different. So same galaxy, how and why it looks completely different in different wavelength. This is the interesting study. Okay. So because our main aim of the human being, of the astronomy, how the universe is formed and why the universe is like this, why, like what we are seeing in our eyes now. So that's why we go beyond optical and other wavelength and we see like this. There will be a lot of examples, don't worry. So now there is a composite picture from the Gamma survey. You can see a same galaxy, it is optical wavelength, how it differently look like far infrared, and ultraviolet. Basically you can see here. So basically you can see here, different part of galaxy is visible in different wavelength. So there should be some physical reason why
different part of galaxy visible in different wavelength. Okay, so there is a, maybe some of you know this galaxy is called Andromeda galaxy, which is our nearest galaxy. It also look different in different wavelength. You can see this how we see in the visible light. Like if you see in a telescope, you can see like this. But different telescope in different wavelength, they look different, completely different picture. And now there is another example here. So this is the galaxy, how it look like in optical wavelength, and this how it look like in infrared, how it look like in ultraviolet, and how it look like in X-ray, and how it look like in radio. Basically, we are just seeing the same galaxy in different wavelength. There is a reason. There is a very famous and very important reason why we study universe in different wavelength. So basically here you can see different parts are visible, and you can, maybe it is not visible to you, but there are different temperatures are here. In black body radiation, you must have studied the Wien's displacement law. Each wavelength corresponding to a different temperature. Let's say our sun is visible in our eyes. That means it is emitting in optical light. There are stars in our galaxy which are very hot. Like they are called blue stars, because when you see the sky, some stars visible red, some stars visible orange, some stars visible blue. Blue means, blue means high temperature. You have studied in your +2 chemistry lab. Blue flame means high temperature, red flame or yellow flame means low temperature. So this is the exact thing here that you maybe studied or you will study the Wien's displacement law, that the higher the wavelength, lower the temperature. Okay, because UV is the low wavelength, it is only 100 nanometer. That's the temperature is so high, it is even more higher than our sun. Our sun is, the surface temperature of our sun is only 5000 degree Kelvin. There are some stars which are million degrees centigrade temperature because of the physical processes going on inside their core. So similar for galaxies, because galaxies are made up of stars. So that's why we can see here some part of galaxy in ultraviolet. That means there are high temperature stars are present there. That's why we can see only this part in UV, and other parts are not visible because they are not emitting in that radiation. So that's why. So our focus is radio now, and as I said, different wavelength, different story. Okay, it's something like this. गोटे न्यूज चैनल गोटे जन विषय किसी कथा कहे किसी कथा कहे, तो same type of. So now this is also little important, the distance scale in astronomy. As I said, our universe is really huge. It's so huge. आमे माने किलोमीटर यूज करि पारि, काने किलोमीटर यूज करे से even कोटी to अधिक आसो. So that's why we use different length scale to measure the universe. Like we know that the speed of light is 3 lakh kilometer per second. Okay, so how can you imagine this? Like it is a 3 lakh kilometer per second. So it's like तुम्हारे आँखें बंद करी खोलला भीतरे लाइट पृथ्वी चारिपटे 8000 बुली पड़े आसे. मैं बुझु से कितने स्पीड. So the fastest rocket हमारा सी जाए only 72,000 kilometer per hour रे. किंतु लाइट इतने स्पीड माने जब सी हमें जानी चाहिए लाइट 3 lakh kilometer per second, but you have to feel it because astronomy distance बड़ा इतने अधिक हो, जितनी आपे लाइट रे हमें मेजर करो. तो 2 मिनट रे लाइट पाखापाखि जाए कितनी दूर, but एको कहते लाइट सेकेंड होची 3 lakh kilometer माने लाइट केते 2 सेकेंड केते दूर गला. काइना जेंदी भइले एस्ट्रोनॉमर मानक पाखे किछि लाभ नै, तांको गोटे जिंस मिले लाइट, ताके लाइट को सब जिंस कर दियंती. माने बेसिकली तो जस्ट गोटे लाइट को धरिकी से सब लोगों को बोका बने दियंती. तो सेमिति the light can travel 7.5 times around the earth in a 1 second. It is so fast, and the 2 pi r of earth is around 6000 kilometers. So to measure the distance in astronomy we use time scale, different length scale. So sometimes we use light year, and
and 1 parsec. Remember this two name. एदिरा मन रखि दाओ. Light year और parsec. Light year होची गोटे वर्ष रे लाइट केते स्पीड केते दूर जाए. माने 3 लाख into 365 days into 24 hour into 3600 सेकंड. सेति की दूर लाइट जाए ताको हमें लाइट ईयर कहू. तो आमे माने जानि छे सूर्य हमटू दूर रे अछि. सूर्य टू लाइट हमको आसे पे 8 सेकंड लागे. तो तुम जब मल्टीप्लाई करो तो सेति दूर से अछि सूर्य. माने तमे माने सबटू नियरेस्ट स्टार हमरो अल्फा सेंचुरी अल्फा सेंटाउरी से जहाँ भी तुम्हें सुनिथिबो कि जानिथिबो कि नॉलेज न जानिथिले भी ता नाम अछि अल्फा सेंटाउरी. अल्फा सेंटाउरी हमटू 3.26 लाइट ईयर अछि. तो सेति पे 1 पार्सेक होछि हमें यूज करछे 3.26 लाइट ईयर को हमें गोटे स्टैंडर्ड स्केल ले जाय छे 1 पार्सेक. जेमति हमें मीटर को डिफाइन करछे केजी को डिफाइन करछे सेमिति हम डिफाइन करछु 1 पार्सेक. 1 पार्सेक होछि 3.26 लाइट ईयर. माने लाइट स्पीड रे तमे जदि से स्टार पाखु जिवो देन तमे 3.26 लाइट ईयर रे पहुंचबो. तमे जदि हम रॉकेट रे जिवो गोटे पाखा पाखी मिलियन या बिलियन माने 10 लाख वर्ष लागो. जोटा कि तमे मरि करी माने कोन ये पृथ्वी मैंने आम 100 वर्ष भी आजिकल पहुंचुनी. तो लाइट ईयर और पार्सेक मन रखि दाओ. तो जोड़ा कि हमें आउट गोटे डिस्टेंस स्केल हमें यूज कर सेटा होची 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और 1 AU. पृथ्वी और सूर्य भितर जो दूरता है बोले फिक्स थाए. फिक्स माने सूर्य मझिरे अछि और पृथ्वी ता चारि पटे गोटे इलिप्टिकल ईयर घुरे. तो तार गोटे मेजर एक्सिस अछि माइनर एक्सिस अछि इलिप्स रे और तार एवरेज को लेके √a² + b² को लेके हमें तार 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिफाइन करछ. तो से लेंथ रे हम मेजर कर परिबा काहे कि हम मीटर जदि किलोमीटर कहबा एबे तो भाबो जदि हम किलोमीटर यूज करबी मोर गोटे कॉलेज रिसर्चर आसी मत पचारिबो आ सागर से गैलेक्सी तमरो केते दूर अछि. हम कोन कहबी माने सी हमठू गोटे 1 1 1 2 2 2 2 2 मते कहि गोटे मिनिट लागिबो. तो सेहि में हम लंबा लेंस के यूज करू ताकि इजी हो. तमे जेमति कि किलोमीटर यूज करछ राइट. तमे सेंटीमीटर यूज करो. तमे केबे कोइ माने कि बारीपदर भुवनेश्वर 1 करोड़ सेंटीमीटर काहे कि बहुत लंबा है. तो सेहि में हमें ताको सेमिति यूज करछ. तो एटा होची एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस गोटे माने हमरो जेमति कहली पृथ्वी और सूर्य भितर दूरता होची 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. से अनुसार बाकी ग्रह गुडा को एमति अछि. तो आमे जानि जे सबटो लास्ट ग्रह होची नेपच्यून नै नै. तो तमाम गोटे एग्जांपल देबी गोटे एटे हला मो टेबुल सर यूज करबे. तमाम गोटे छोटे एग्जांपल देबी. एटे देखो मु जानि कि एटे तमाम सब देखा जीवा नै. एटे छोटे गोटे टेबल रखि छला. ए टेबल ता होची भाबो एटा सूर्य हला. मु कोन कहबी सूर्य आ पृथ्वी के दूर अछि 1 सेंटीमीटर मात्र हला. तो भाबो तो एबे तमन देखा एटा होची कर्वटा ओके. तो एई कर्वटा भाबो सूर्य हला. मोर जो एई हेडफोन ना एटा भाबो एटा होची पृथ्वी हला. मु कोन कहली सूर्य और पृथ्वी भितर डिस्टेंस होची सूर्य और पृथ्वी भितर डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. भाबो मु से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को नहीं गली 1 सेंटीमीटर हला. एटा भाबो एटा होची 1 से मु एटा को जस्ट सूर्य टू 1 सेंटीमीटर दूर रखी हला. ता अर्थ एट कोन लिखाइ छी हमर लास्ट जो सोलर सिस्टम रो ग्रह होची सेटा होची नेपच्यून जोटा कि 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अछि. ता अर्थ ए कर्व टू 30 सेंटीमीटर दूर रहबो. जदि पृथ्वी 1 सेंटीमीटर दूर रहउची देन नेपच्यून ता 30 सेंटीमीटर दूर रहबो ना नै माने से अनुसार. तो भाबो मु जोटी छिडा आइछि ए एरियाटा होचे नेपच्यून हला. माने जस्ट 30 सेंटीमीटर दूर रहे. तो केते जण एटा मु यस टू नो पछे समझ हाथ उठे हला. केते जण भाबुछ सोलर सिस्टम सेटे सरी गला. सोलर सिस्टम प्लूटो रे सरे जति कि हम जानि छे. तो प्लूटो टोटल लिखाइ नै एठी प्लूटो अछि 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. दैट मींस 50 सेंटीमीटर से स्केल रे काना पृथ्वी एटा 1 सेंटीमीटर दूर अछि. तो मने बुझि पारिबो
पृथ्वी 1 सेंटीमीटर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मु ताको एग्जांपल लेनी 1 सेंटीमीटर नेपच्यून 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 30 सेंटीमीटर प्लूटो 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तार से होची 50 सेंटीमीटर हैला तो 50 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर बेसी दूर नहीं हैला तो ई पाखे रहला तो कोन हमारा सोलर सिस्टम सेठी सरी जाउची की यस किए कहूची यस हाथ देखो किए कहूची नो हाथ देखो সর্বনে तमाना भितर कि गेस करी कहि परिबो जे सोलर सिस्टम मु छिड़ा हेले हला मु छिड़ा आइछि समान तमरा प्लूटो जगह रे दूर पाखा पाखी रफली हला के भाबुच से स्केल रे सोलर सिस्टम का कोड सहिबो कि गेस करी कहि परिबो कि जणे जणे ठियाई कहि परिबो केते दूर रे सथिबो सोलर सिस्टम का से लास्ट रे ना एंटायर कॉलेज पाखे ना कोठी ना हाफ किलोमीटर ना 10 किलोमीटर ना 1000 किलोमीटर केते दूर रे माने तो माने एक दिन से मन रखि था कि 1 सेंटीमीटर होची 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो से अनुसार कि कहबो हाथ नहीं कहि परिबो जने केते दूर हे देबो कि चल दे भूल हो ठीक हो कि चल दे यदि न कहबो किछ करि परिबो ना प्रश्न बट किए गेस कर के परिबो माने रफ गेस पड़े केते दूर रे सोलर सिस्टम सब थिबो तेरे एठी तुम बुझी परिबो कि डिस्टेंस केते अधिक हमर माने एटलीस्ट हम सोलर सिस्टम माने हमर सौर जगत रे को किए भी किछ को मु बिदुर लास्ट से बचे रहबे किए भाबु जे केते दूर हे परिबो ए किए भाबु जे ए इंड सजिबो माने बुझो ना सेटा जदि 50 सेंटीमीटर होची पाखा पाखी केते हो गोटे 1 मीटर 1 मीटर 10 मीटर हो आराम से 10 मीटर तो आले तो से अनुसार 10 into 100 सेंटीमीटर माने 1000 सेंटीमीटर का अर्थ 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एति दूर हेतिबो बोली भाबु छी हो मु आंसर दोची तमरो कॉलेज जो पाखरे जो स्टेट बैंक अछि तमरो सोलर सिस्टम सेट सर माने तमर जो जब तमर कॉलेज में गोटे स्टेट बैंक अछि ना गोटे तो तमरो हमर सोलर सिस्टम यदि छोटो मु कर देबी 1 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर नै करी देन हमर सोलर सिस्टम सरीबो सेही तमरो स्टेट बैंक पाखरे माने सोलर सिस्टम ही होची एते बड़ गोटे सैटेलाइट अछि वॉयेजर 1 बोली ताकू 1980 रे छडा हेतिला हला ताकू सोलर सिस्टम क्रॉस करिया पे से एबे पर्यंत 1980 माने बुझछ ना 20 2025 45 वर्ष पाखा पाखी हेलानी माने 35 से 35 मिनट पाखा पाखी हेलानी से एबे पर्यंत पहुंची छी नेपच्यून पाखरे हेला माने बुझछ ना जे एडी अछि से मो पाखा पर्यंत पहुंची से पहुंचीबो स्टेट बैंक पर्यंत तो मोर कहिबार एडी टाइम भीतर अधिक एडा इंपोर्टेंट थिला कि एस्ट्रोनॉमिकल स्केल गुडा को बहुत बड़ एक्चुअली तो सीधा से तार सब बड़ टेक अवे कि astronomical scales we are dealing with is huge, it's unimaginable. Like तुम्हें एक करे 9टा 10टा शून्य पकेले भी कम पड़ जाए जदि भी मु पार्सेक रे कहिबी पार्सेक तो ऑलरेडी 3.26 राइट है तो मीटर तो भूल रे कहि परिबेनी सेंटीमीटर तो भूल रे कहि परिबेनी सेंटीमीटर कहि से पूरा कंटेंट नहीं तो सेहि भाई हमें डिस्टेंस के लेके यूज करू तो एडी मु टाइम भीतर रीजन देला तमे जीवन में केबे भूलबोनी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के इतने लंबा तो हाँ एबे सब इंपोर्टेंट जिंस ओरिजिन ऑफ द रेडियो एमिशन फ्रॉम द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स व्हाई वी आर यूजिंग रेडियो टेलीस्कोप्स टू सी ए गैलेक्सी और टू सी द स्टार्स एंड एवरीथिंग व्हाई द रीजन इज सिंपल सिंक्रोटन रेडिएशन तो समस्त पड़ते सिंक्रोटन रेडिएशन मैग्नेटिक फील्ड चारिपट जेते चार्ज पार्टिकल बुले सेते जो रेडिएशन से दिए ताकू सिंक्रोटन हमें एमिशन को कहना जेते बेले मैग्नेटिक फील्ड कौन करे ना चार्ज पार्टिकल फॉलो करे मैग्नेटिक फील्ड पूरा बुले एकदम जब सीधा कहीं की ना गैलेक्सी के बहुत स्टार अछि से स्टार माने कि बहुत गैस अछि आयनाइज गैस माने जो माने कि बहुत हाई टेंपरेचर तो से माने कौन करन सब चार्ज पार्टिकल फ्री ही था और जेहेतु
ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମାସ୍ ଥାଏ, ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଚାରିପଟେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ବୁଲନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି ସିଙ୍କ୍ରୋଟ୍ରନ୍ ରେଡିଏସନ୍, ଯୋଉଟାକି ଆସେ ରେଡ଼ିଓ ୱେଭଲେନ୍ଥରେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସିଧା ଯାଉଛି ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଲାତ ମାରିବ ସିଏ ଅଫକୋର୍ସ ମାନେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ କ'ଣ କରେ ତାକୁ ଲାତ ମାରି ବାହାର କରିଦିଏ। So whenever it will go out of this its path, it will see. If I am going like this, if the electron will go like this, in that direction it will send a photon, and that photon will go to the radio wavelength because I am an electron. I don't have much energy. If I will send an extra photon, I will definitely send it to a very low energy one. And radio is a low. That's why synchrotron radiation is one of the key emission that we see in all of the celestial objects. And यूनिवर्स एमती किसी जिनस ना जी रेडियो एमिशन करे तुम भी कर मु भी करे ग्राउंड भी करे समस्त रेडियो एमिशन कर यूनिवर्स से कह जाए कि रेडियो ऑब्जर्व करे बहुत कष्ट कहीं ना हमको सिग्नल मिले जमी तुम शुणी नॉइज माने जनरली एरर आसे 1 रे 0.001 राइट नहले 10⁻⁶ इन नॉइज आसे कि रेडियो रे प्रॉब्लम कोन है दुनिया रे समस्त रेडियो एमिशन करथि तुम गोटे गैलेक्सी पॉइंट करिवो ता साइड वाले रेडियो एमिशन करथो तमरो ग्राउंड रेडियो एमिशन करिवो तुम टेलीस्कोप रेडियो एमिशन करिवो तो जानिबो किमति के एग्जैक्ट एल्गोरिथम सोफिस्टिकेटेड हम रेडियो ऑब्जर्वेशन करियो बाय द वे ए नोटटा मु जेते ऑर्गेनाइजेशन रहउथि सेते मु लिखि देली तो ए नोट होची तुम शुणिथिबो एलएस कपलिंग जेते बेले इलेक्ट्रॉन रो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम टोटल जेते बेले वेक्टर कपलिंग करंती सेमान बनंती टोटल एंगुलर मोमेंटम तो ताको एलएस कपलिंग कहै मोस्टली पिला माने किछि पढिथिबो कि आगु मान पढिबो बीएससी रे कि एमएससी रे आगु पढिबो जेतु मु बीएससी पढि तो जानि सिथि कि बीएससी रे एमएससी रे तो मु पढिथिली जेते बेले मु कोचिंग नथली कि एमएससी पढिथिली तो एलएस कपलिंग हो किंतु आउट जिनस आगु अछि जोडा होछि हाइपर फाइन स्प्लिटिंग तुम बेले सुनिथिबो काहे कि ना इलेक्ट्रॉन बोले न्यूक्लियस चारिपटे तो न्यूक्लियस रा निजर गोटे चार्ज अछि जे प्रोटॉन थांती तो न्यूक्लियस निजर गोटे मैग्नेटिक फील्ड अछि सो से न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड जेते बेले कपलिंग हुए एलएस कपलिंग टोटल रिलेटेड फिगर्स जेते बेले समान आ गोटे कपलिंग करन ताकू कहन से एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल बाहर ताकू कहते हाइब्रिड फाइन स्प्लिटिंग तो जेहेतु हाइड्रोजन रो सेंटर रे गोटे प्रोटॉन आ चारिपटे इलेक्ट्रॉन अछि आ हम यूनिवर्स सबटु अधिक एबंडेंट एलिमेंट होछि हाइड्रोजन माने हम यूनिवर्स 97% हाइड्रोजन रे दिया हैला तो सेहिति पई मु हाइड्रोजन रो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग को यूज करि कि सब रेडियो एस्ट्रोनॉमर से माने देखि पारंती आ सेटा आसे 21 सेंटीमीटर से जे तमे कैलकुलेशन करिवो तमे से आसे 21 सेंटीमीटर से इडा होछ मोर एग्जैक्ट फोटो मोर एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर खातारू जोड़ा नहीं मु जोड़ा इंग्लिश रे पढ़थि तो मोर कहबार अर्थ एटा दिला कि मु केबे जानि नथि कि बेटा यूज करि बेटा आसी तो तमे जहां भी जेतर पढिबो मन रखि ताओ कि कांसेप्ट बुझि दियो भले ही तमे ताकू मार्क न आनी करे कि माने ताकू किछि यूज न करि कांसेप्ट बुझि दियो तो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग जेते बेले हुए से 21 सेंटीमीटर लाइन रे आसे so only these two we use to see our galaxy and everything. So now I will go to the introduction to radio astronomy. मैंने हमें actually कौन करूँ? So radio wavelength actually से start with 1 millimeter rise size रो और सब largest radio wavelength होचे 10,000 kilometer. मैंने तो बुझो ना मैंने बहुत बड़ा even अर्थ टू भी बड़ा हम पृथ्वी टू बड़ा से वे गुडा तो जेहेतु से बड़ा हुए हमको डेफिनेटली गोटे बड़ टेलीस्कोप यूज करिया पड़े केना जति बड़ा सानो होई दिबो तमे से मतलब के दे बड़ा बड़ा ही तो भलो बड़ा डिटेक्टर दरकार ना तो सही अनुसार हमें रेडियो टेलीस्कोप यूज करू तो लॉन्गर द वेवलेंथ लॉन्गर द टेलीस्कोप साइज एले हम पढिबो गोटे वेवलेंथ रो गोटे ताको बोधे डीप
ब्रोगली रेशियो ना कोन कहंती गोटे वेवलेंथ रे जिते बड़ा डिटेक्ट जिते बड़ा वेवलेंथ तुम जिते बड़ा डिटेक्टर दरकार पड़ो डिटेक्टर छोटा वाला तुम वेव को कैप्चर ही कर परिबनी तो एबे हम जानी जे ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो कहले विजिबल वेवलेंथ रे आसे से टेलीस्कोप एमी देखा जाए गोटे मिरर थाए त पाखु जीवो एमी देखिबो किछ देखा जीवो से जस्ट गोटे मिरर गोटे आ किछ नै किंतु रेडियो वेव गुडा को बहुत बड़ा सेति में हम डिफरेंट टाइप रो वेवलेंथ यूज करो सेटा होची एटा होची गोटे रेडियो टेलीस्कोप जो कि देखा जाए प्रॉपर्ली गोटे से टीवी एंटीना गोटे टीवी एंटीना देखि दिबो तमे डिश टीवी देखि दिबो तमरो जदि रेडियो एंटीना तुम देखि न दिबो तो मोस्टली सेटा रेडियो टेलीस्कोप जमी सेमिति एक्जेक्टली देखा जाते काहे कि ना हमर मोबाइल हमर टीवी हमर रेडियो जो हम जो सुनु गीत सब गुडा को रेडियो वेव रे ही काम करते तो सेति में ए टेलीस्कोप किछ डिफरेंस है सेमिति ये होची गोटे जस्ट गोटे मेटल रो गोटे बनै दिबे छता परिका आ ऊपर गोटे ए ऊपर जस्ट खाली गोटे लागि छी गोटे हमर गोटे रिसीवर जोडा कि रेडियो रिसीवर से रिसीवर सेम ही जोडा कि रेडियो रे थिला फास्ट देखै थिले तो सेटा को फोकस सबटा फोकस हो आ सेंटर रे सब जमा हो माने जेमति गोटे उत्तल दर्पण रे लाइट रे गोटा आसे से गोटे फोकस पॉइंट बनाय ना एमति गोटे एके सेमिति आर सेमिति सरफेस पूरा एमति कनकेव हो आ से गोटे पॉइंट रे गोटे रिसीवर रखिदो जेना सेट सबटा फोकस सबटा फेरिबे तो सिंपल किछि डिफरेंस नै तो एटा होची रेडियो गोटे रेडियो टेलीस्कोप और दुनिया सबसे लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप चाइना रे अछि रेडी 0.5 किलोमीटर लंबा माने आधा किलोमीटर लंबा माने एठू हम स्टेट बैंक जाय खाओ से जस्ट ताको माटी रे खोली तो रखि दिछ काहे ताको उठे बुले परिबनी कि लोहा रे कि को मेटल रे तियारी तो बहुत भारी हो तो सेहिति में एस्ट्रोनॉमर माने कोन करछन कहले वेवलेंथ जते बड़ा टेलीस्कोप सेते बड़ा दरकार लार्जेस्ट रेडियो वेवलेंथ होची 10000 किलोमीटर माने केते बड़ा वेव गुडा तो सब इंटरेस्टिंग थिंग्स एटा द फादर ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन is an Indian and his name is Jagdish Chandra Bose and after that Marconi took his patent and make it famous and he got the Nobel Prize so basically radio उद्भावन पाई Marconi को Nobel Prize जो मिली थी सेटा जगदीश चंद्र बोस को भी मिलिया कथा जेहेतु आमे सेते बेले एते इंडिया रे आमे ब्रिटिश अंडर थिले बहुत प्रॉब्लमेटिक हला सेते बेले हमको रिकॉग्नाइज करले सेते में ताको नोबेल प्राइज सेटा में मिल नथला तो इवन IEEE गोटे यूनिट अछि गोटे वर्ल्ड रे जे कि सब इंजीनियरिंग की जो रिकॉग्नाइज करे से सब लीड करे से माने जगदीश चंद्र बोस को रिकॉग्नाइज करंती रेडियो कम्युनिकेशन रो फादर बोली मार्कोनी को नहीं तो से माने एमिति नै जे हमो इंडिया रे किछि हिल थिला तो सेटा तार एग्जांपल थिला जेमति सार कहले मन थो तमरो कार्ल जी जांस्की फास्ट स्टार्ट करथिले रेडियो टेलीस्कोप रेडियो ऑपरेटिंग करे से बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स द फादर ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी His name is Carl G. Jansky. से USA रोजले देखो मु बाहर रोचे मु कहबी तुमको बड़ा टेलीस्कोप देखि केबे डरिबो ताको ना गुडा सेमिति जदी इंडिया रे देइना ता लाई बांछारी देइथा माने सेमिति को यार दिसले बोल सेमिति तो कथा कहबारे थिला एडा से सेते बेले रेडियो एस्ट्रोनॉमी किछ नथिला काना लोक माने देखिले स्टार्ट करिबे ना एस्ट्रोनॉमी आगे लोक माने स्टार देखुतले कोहिले ए राशि से राशि अछि देन समान देखुतले हला किंतु रेडियो देखा जाए नहीं तो आमके सेते बेले वर्ल्ड वॉर 2 टाइम रे गोटे इंटरफेरेंस आसुतला से माने भाबिले रशिया मध्ये गोटे मिसाइल पठौची यूएस को कि जर्मन से रशिया ने हिटलर गोटे मिसाइल पठौची यूरोप को कि यूएस को यूएस रे पकिया पे तो तांके जस्ट चेक करले कि से रेडियो इंटरफेरेंस आसुची जो डिवाइस पड़ो से गोटे डिवाइस बनेले ऐसे डिवाइस ना थिला मेरी गो राउंड और से डिवाइस स्टडी करके ट्राई करले जे एक्चुअली कोन है तांको तांके जने इंजीनियर थिला कम्युनिकेशन इंजीनियर थिला तांको यूएस से पैसा देला त करिया पे किंतु तांके जहां डिस्कवर करिले सेटा ही पूरा दुनिया चेंज कर देला तांके डिस्कवर करले से जो रेडियो वेव बडा आसुची तांके रिसीव करछन से जो मशीन रे से मशीन को आज हम रेडियो टेलीस्कोप कहूछु ए टेलीस्कोपटा छता नहीं काहे रेडियो टेलीस्कोप दु प्रकार बने परबो तमे इधर छता बडे बने परबो नोले डाइपोल बने परबो डाइपोल होची जेमति कि डाइपोल ना पड़थो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म राइट नेगेटिव पॉजिटिव को ही बन जाए कोन जदि तुम डाइपोल बनेबो गोटे पॉजिटिव साइड
ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ୍ ଯଦି ଆସିବ ଏମିତି ତାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଟଚ୍ କରିବ ସେ ତାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବ, କାରଣ ୱେଭ୍ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ଆସିବ କି ତାର ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ଆସିବ, ତାର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଟଚ୍ ସେ ଚାର୍ଜ ପଡ଼ିଯିବ ଏମିତି ହେଇଗଲ ଏପଟ ନେଗେଟିଭ ତାଙ୍କେ ସେଇ ଟାଇପ୍ ନେଗେଟିଭ ବନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଠି ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ୱେଭ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଥିଲା ସିଏ କୋଉ ମିସାଇଲ୍ରୁ ଆସୁନଥିଲା, ସିଏ ଆସୁଥିଲା ଆମର ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିର ସେଣ୍ଟରରୁ। ତ ଆମ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିର ସେଣ୍ଟରରୁ ରେଡ଼ିଓ ଆସିଲା କୁଆଡ଼େ, ଲାଇକ୍ why it is possible, because until that time no one know that, no one ମାନେ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ କି ଆମ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ବି ରେଡ଼ିଓ ୱେଭ୍ ଏମିଟ୍ କରେ ବୋଲି। ତ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ରେଡ଼ିଓ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି 19 ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ପୂର୍ବରୁ 1933ରେ ସେ ବେଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଲାନି, ଏଇ ରିସର୍ଚ୍ଚର ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ନ ମିଳିଲା କାମ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯାନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ଦେନ୍ ସେ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ସି ପ୍ରପର ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମର ଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମର ଯିଏକି ରେଡ଼ିଓ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି ପଢ଼ିଲେ। ସେ ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମ୍ ଏନ୍ଆର୍ଓ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ୟୁଏସ୍ରେ। ସୋ ମୁଁ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯାଇଥିଲି, ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ। ସେଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ପୁରା ଡେଜର୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ବନେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ତମକୁ କହିଲି ଦୁନିଆର ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ିଓ ୱେଭ୍ ଏମିଟ୍ କରନ୍ତି। ଭାବ ମୁଁ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରୁଛି ମୋର ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିର, ଯଦି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀରେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ମୋ ଡାଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଯଦି ବିଲେଇ ଚାଲିକି ପଳେଇଲା ଦେନ୍ ବି ଡାଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ we always prefer to put radio telescopes in the remote areas. So then रोटेरी पर जहाँ स्टार्ट करते हैं से फर्स्ट टाइम मैपिंग करते हैं स्काई मैपिंग करी देखले कि गैलेक्सी सेंटर रो और किसी एक्स्ट्रा सोर्स रो रेडियो एमिशन आसुची और सेटू स्टार्ट हेतले रेडियो एस्ट्रोनॉमी। तापर नाम जानिले रेडियो वेव कोन रेडियो एस्ट्रोनॉमी केमि स्टार्ट हला और रेडियो टेलीस्कोप कोन के जानिले और गैलेक्सी रो डिफरेंट केमि की करते। So now I will go through the radio universe, how the radio universe look like. Okay, this is so there will be lot of images and I will not spend much time here because those are just images. So this is our sun and how it will look different in radio. Like when you use a optical telescope, how it look like, and when you use a radio telescope, how it look like. So this is the radio map of our sun, how it will be visible in radio waves. There is no much more difference because the sun is completely round and it looks completely similar. But there are a lot of different spots are there. Those are actually our sunspots. Sunspots are visible pronouns in the radio waves. So similarly, what is this? Jupiter. So the interesting thing, when you see this same planet in radio waves, it looks like this. So basically the planet is round and this is the exact same part. And why these things are here? What is these things? ମାନେ ଅର୍ଜୁନ କର୍ଣ୍ଣ ସର ଛାଡୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ସେଠି କିଛି ନା କ'ଣ ସେମିତି ନାହିଁ କିଛି ତ କିଛି ତ ମାନେ something is there, right? So those are the charged particles, like we know in our earth, north pole, south pole, when the charged particle arrive from the sun, they go through the magnetic field and they create aurora, light blue, orange and red lights we can see in the sky if you go to the north part of earth. So similar thing, the charged particles are coming here and they are transferring through the equator and they create two north south pole kind of thing, exact kind of thing. So that's why the picture is different. And if you see in optical, you can recognize these things. That means a planet also have the synchrotron radiation. So similarly, this is a galaxy. This is a simple galaxy and those are two stars in the night sky. Nothing is there, okay? Nothing else is visible in optical light. That is the same thing that you can see in your eyes. But when you see this thing in radio, things are different. Same galaxy emitting two water kind of jets and they are accumulating here. And the interesting thing is, this radio emission, the water jet kind of thing you are seeing here, those are much more larger than the galaxy.
If the galaxy is around 1 centimeter, radio jets are about the size of Earth, not even size of kilometer. Those are huge. So those are actually called radio jets, and those radio jets are emitted by the supermassive black holes present at the center of the galaxy. So ସବୁ galaxy center रे ଗୋଟେ ଗୋଟେ supermassive black hole ଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ magnetic field through ସେମାନେ bipolar jet emit କରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କହୁ radio jet। ଆଉ ଏ ଟୋଟାଲ ସିଷ୍ଟମ को ଆମେ କହୁ रेडियो गैलेक्सी। जो गैलेक्सी रेडियो वेवलेंथ रे देखा जाए ଆମେ ତାକୁ रेडियो गैलेक्सी कहू। ସବୁ गैलेक्सी रेडियो एमिट करନ୍ତି ନାହିଁ। दुनिया यूनिवर्स रे ओनली 10% गैलेक्सी ही रेडियो एमिट करନ୍ତି और जो मैं देखा जाते एमिट देखा जाते। तो एडा होची गोटे नॉर्मल गैलेक्सी और रेडियो गैलेक्सी केमी देखा जाए। जस्ट हम रेडियो गैलेक्सी रेडियो वेव रे केमी देखा जाए। आ गुड एग्जांपल होची एडा होची सेम गैलेक्सी देखि दिला मैं ब्लू कलर रे जस्ट रेड कलर टा डिफरेंट कलर रे आउ एठी गोटे जिनसे तमे मार्क करबा जानि परबन देखा जाउनी एडी गोटे छोटिया गोटे डॉट देखा तुमको छोटिया डॉट देखा एडी गोटे गैलेक्सी बड़े अच्छी स्टार बड़े एडी गोटे अच्छी मु जस्ट साइज कंपैरिजन पे रखी छी एडा एते बड़ तार तुलना में हम मिल्की वे केते छोटा देखा जाउची। हम ऑलरेडी जानि हम सोलर सिस्टम एते बड़ सोलर हम गैलेक्सी रे गोटे 100 करोड़ सोलर सिस्टम अच्छी माने गैलेक्सी रे केते बड़ आम गैलेक्सी एते बड़ हेगी भी ता सामने तो छोटा देखा जाउची। ता अर्थ ए जो जेट इमिशन होउछ रेडियो रे एडी छोटिया टुई जिंसडा बड़े एते लंबा बड़ा जेट बनउची तो सेटा सब बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग जिंस। तो एडा में डिफरेंट गैलेक्सी सेंटर से केमी देखा जाए एडा जनरली एस्ट्रोनॉमर माने कौन करंती फिक्स कर दियंती एडा आपण देख परिबे तमाने देख परिबे एडे जोड़ा आखिर देखा जाए रेडियो डिफरेंट तीन वेवलेंथ एक्सरे रेडियो ऑप्टिकल तीनों का मिक्स करा दिया। तो जेते बेले when we combine different wavelength in a same picture we will see the violent or the माने जेमति कि उग्र रूप हम देखो गोटे गैलेक्सी like how the very violent processes are happening in the normal like when you see in the normal life just सब के सामने रेडियो वाला देखो तो देखो से सुपरमासिव ब्लैक होल इतने एमिशन करे से रेडियो वेव गुड़ा को बाहर एडा गोटे गैलेक्सी गोटे एडा गोटे गैलेक्सी माने कंपैरिजन गोटे ऐसे डिफरेंट टाइप गैलेक्सी रेडियो रे देखा जाए एग्जैक्टली एडा गोटे देखा पिक्चर होले। तो मोस्टली मुझे तो काम करे माने मो लैपटॉप रे मो मम्मी आसी कहे ए कोन किंच ओडा कोसी काम करछु तू को पाठ को करछु तू तो सेमिति मोस्टली सेमिति देखा जान से। तो एडा गोटे गैलेक्सी एक्स टाइप रो से गैलेक्सी गुडा को तो एडा गोटे गैलेक्सी मो सार डिस्कवर करथले माने मु जाकर पीएचडी करछु एडा गोटे गैलेक्सी जोडे पुणे रे काम करथले से सार माने डिस्कवर करथले। तो एडा गोटे गैलेक्सी आंको विषय मु कहि दे आनंद होता जने सार से डिस्कवर करथले। सो मु एमिति गैलेक्सी गुडा काम करे बट मु एमिति का सबुठ बड़ गैलेक्सी गुडा काम करे। तो से विषय मु रिसर्च करे आ से विषय मु सो मो काम होछि फाइंड करबा कि हम यूनिवर्स रे गैलेक्सी गुडा इवोल्यूशन केमिति हेबे हमरो पृथ्वी रे जीवन काहे के अछि काहे कि ना केते बड़ बड़ उल्कापिंड आसो से बड़ा सब ध्वंस करी पड़े राइट। सो व्हाई वी आर हियर व्हाई द यूनिवर्स इज लाइक दिस हाउ द गैलेक्सी इवॉल्व सो दोस थिंग्स आई वर्क हियर। सो दिस ये लार्जेस्ट गैलेक्सी गोटे तार कंपैरिजन अछि गोटे बट सब इंपोर्टेंट जिंस एस्ट्रोनॉमी आउ बहुत इंपैक्ट करे हमर सोसाइटी रे मु दीटा जिंस नै कहबी गोटे होछि मेडिकल इमेजिंग आउ रेडियो एस्ट्रोनॉमी। तमे जे सीटी स्कैन करो एमआरआई हुए से सब टेक्निक हमर रेडियो एस्ट्रोनॉमी भी जाय छै। तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी नथांदा हमें आज सीटी स्कैन करि पना कि एमआरआई भी करि पना। सो सेटा होछि एस्ट्रोनॉमी रो इंपैक्ट केना व्हेन द रेडियो एस्ट्रोनॉमी डिस्कवर्ड इन 1933 they also never thought that it would be useful in medical imaging. So this is the important part. So let's say if you are doing research in cancer, you can tell to anyone that okay I am doing research in cancer and I can give the medicine to cancer people and your country or your prime minister will give you money. But when you do fundamental science
no one is going to pay you because they will ask you what is the benefit for the human being for this research. But we have to believe and we have to understand our scientists that whatever they are doing, advanced thing, it will be helpful later in the like after 20-30 year. Can Einstein discover relativity 1905 रे 1915 रे, but एबे जाके 100 वर्ष तक प्रूफ था, राइट? और सही रिलेटिविटी यूज हुए सेकेंड कम्युनिकेशन है ना सही जिनस न होइतले हमर जो बात्या अछि तारा हमें किसी सॉल्यूशन कर पाए. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बिलीव इन फंडामेंटल साइंस. सो तार टेकअवे सीटा. सो सेमिति सबटू टेक्निक जोड़ा यूज करे ता नाम होछ अपर्चर सिंथेसिस. ता नाम जस्ट एमिति जस्ट नाम मन रखितो अपर्चर सिंथेसिस. और ताकू डिस्कवर ताकू यूज करी हमर पुणे रे गोटे रेडियो टेलीस्कोप अछि वर्ल्ड रो गोटे फेमस टेलीस्कोप ता नाम होछि GMRT और जाइंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप. सेठी एस्ट्रोनॉमर माने मिसकी काम करନ୍ତି और से माने सो बेसिकली मल्टीपल टेलीस्कोप भी अछि ना किलोमीटर बने टेलीस्कोप बने, राइट? एस्ट्रोनॉमर ने कौन करे गोटे वन